हेलो हेलो यस चलिए बढ़ते हैं आज के पहले मैच के। और एक तरफ होंगे जीवा रॉयल्स तो दूसरी तरफ होंगे नवकार। अक्षत यहाँ पर पहले गेंद के लिए तैयार, बट रन अप में थोड़ी सी चूक। आप देख रहे हैं सैपियो एनालिटिक्स प्रेजेंट सेंटर चैंपियंस ट्रॉफी। बहुत ही बढ़िया ये दिन और बहुत ही बढ़िया आज का ये ओवरऑल एटमॉस्फेयर क्रिकेट के लिए। दोनों ही टीम्स बिल्कुल चार्ज्ड अप। एक तरफ है जीवा रॉयल्स तो एक तरफ है टीम नवकार। अक्षत बॉलिंग मार्क पर, पहला ही बॉल, क्या खेल कर निकाला है यहाँ पर। कोई भी चांस नहीं होगा फील्डर्स के लिए, बॉल निकल कर जाएगी 4 रनों के लिए लाइक ए ट्रेसर बुलेट। ये आता हुआ पहले ही बॉल पर मैनिसन चौका। क्या शॉट था यहाँ पर बैट्समैन की बैट से कवर्स के ओवर पे पहला ही बढ़िया चौका यहाँ पर। अच्छा स्टार्ट मैं कहूँगा बैट्समैन के ओर से यहाँ पर नवकार टीम के लिए। बेहद ही खूबसूरती स्ट्रोक पहले ही बॉल पर। यहाँ पर दूसरे ही बॉल पर अक्षत ने ज़रूर कम बैक किया है। बॉल टप्पा पड़ने के बाद कई बाहर की तरफ स्विंग होकर निकल गई कीपर्स के दस्तानों में। पहले ही बॉल पर ये बढ़िया कवर ड्राइव आने के बाद दूसरा बॉल यहाँ पर डॉट आता हुआ। क्या बढ़िया ये ग्राउंड है सरस्वती का। ज़रूर क्रिकेट खेलने के लिए प्रॉपर कंडीशंस और प्रॉपर विकेट के साथ यहाँ पर हम ये आज का मैच देख रहे हैं। आज के दिन का ये पहला मैच है। अक्षत फिर एक बार तैयार होंगे बॉलिंग मार्क पर। इस वक्त बिल्कुल ही सेफ हैंड्स के साथ खेलते हुए फ्लिक करके निकाला था इसको शॉर्ट मिड विकेट की तरफ। रन की कोई भी गुंजाइश नहीं होगी यहाँ पर। अक्षत ने ज़रूर पहले ही गेंद पर एक चौका उनके अगेंस्ट आया था, पर उसके बाद तुरंत ही उन्होंने अच्छा कमबैक किया है, बैट्समैन को रोक कर रखा है। इस बार कट करने की मंशा थी यहाँ पर बल्लेबाज की, पर उसमें सफल नहीं होंगे क्योंकि बॉल शरीर के बहुत ही नज़दीक से निकल कर गई है कीपर के दस्तानों में और उसी की वजह से यहाँ पर कट नहीं कर पा रहे हैं बल्लेबाज। पहली गेंद पर चौका आने के बाद ज़रूर बॉलर ने एक अच्छा कमबैक किया है। पावर प्ले का ज़रूर ये ओवर होगा। पावर प्ले रिस्ट्रिक्शंस में यहाँ पर बॉलिंग करते हुए अक्षत फिर एक बार यहाँ पर हल्के हाथों से खेल कर निकाला है। पॉइंट का फील्डर ज़रूर उस पर छूकेगा, बट जब तक कि बॉल कवर हो गैदर और थ्रो किया जाएगा। एक रन ऐड होगा टीम के स्कोर बोर्ड में। बेहद अच्छा बैलेंस पहले ओवर में हम देख रहे हैं। बैट्समैन ने भी चार्ज किया है, उसी के साथ बॉलर ने भी अपना कमबैक यहाँ पर दिखाया है। एक बाउंड्री आने के बाद ज़रूर 3 बॉल यहाँ पर डॉट हुई थी, पर उसके बाद सूझबूझ भरा ये सिंगल स्ट्राइक चेंज होगा। अब नए बल्लेबाज आएंगे इस ओवर में पहली बार बॉल फेस करने अक्षत की। यहाँ पे थोड़ी सी लाइन और लेंथ में चूक यहाँ पर हम देखेंगे अक्षत की ओर से। इस ओवर में पहला और इस मैच का भी पहला एक्स्ट्रा यहाँ पर बोर्ड पे दर्ज होगा वाइड के रूप में। ज़रूर अक्षत ने अभी तक अपने पहले ओवर में बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर दिखाई है। एक चौका ज़रूर आया है उनके खिलाफ, पर उसके बाद अच्छा कमबैक करते हुए यहाँ पर अक्षत यहाँ पर पहली सफलता पहले ओवर में यहाँ पर टीम जीवा रॉयल्स के लिए। विशाल का एक बढ़िया कैच यहाँ पर शॉर्ट मिड विकेट पर जरूर तैनात थे। हवा में बॉल लहराती हुई आई बल्लेबाज को पेस और यहाँ पर कट जज नहीं हुआ है और उसी के बीच में यहाँ पर पहला विकेट डाउन होगा टीम नवकार का। जरूर टॉस जीतते हुए प्रथम बल्लेबाजी का निर्णय लिया था, बट पहले ही ओवर में एक बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ टीम नवकार को। मैंने जिस तरीके से कहा था अक्षत ने पिछले भी मैच में बढ़िया गेंदबाजी की थी। लेफ्ट आर्म बॉलर है, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट बॉलिंग करना बहुत पसंद करते हैं और उसी तरीके से ज़्यादा कुछ यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर नहीं पाए बल्लेबाज। शॉर्ट मिड विकेट पर ज़रूर एक फील्डर तैनात था क्योंकि पावर प्ले का ये ओवर है, नई गेंद से गेंदबाजी हो रही है। तो लेफ्ट आर्मर का जैसे हम देखते हैं कि नया बॉल फंस कर आएगा और अंदर की ओर आएगा,
वही तरफ बॉल निकल कर जा रहा था, बट ज़रूर बल्लेबाज ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए अपने टीम के लिए, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन यहाँ पर हुआ नहीं है। ओपनिंग यहाँ पर जोड़ी टूटेगी और पहला विकेट बोर्ड पर लगेगा। जकिन यहाँ पर पहला ही बॉल फेस कर रहे थे और पहला ही बॉल फेस करते हुए उनको जाना पड़ेगा पवेलियन की ओर। अब नए बल्लेबाज हेमंत जाएंगे अभी नए बल्लेबाज के रूप में, तो क्रिश होंगे अभी बॉलिंग मार्क पर। पिछले मैच में बड़ी बढ़िया गेंदबाजी इन्होंने भी की थी। इस बार फिर एक बार फ्लिक ऑफ द रिस्ट, यहाँ पे पोजीशन शेम होगा, बट यहाँ पर उसी के बीच में एक रन आसानी से कंप्लीट की जाएगी। थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन दोनों ही बल्लेबाजों में देखा गया था, बट आसानी से एक रन यहाँ पर पूरा होगा। अब हेमल है नए बल्लेबाज, ज़रूर टीम को अब ज़रूरत है और ज़रूरत पे डिलीवर करना बैट्समैन का यहाँ पर रोल होना चाहिए। नए बल्लेबाज है, आज दिन का ये पहला मैच है, तो ज़रूर पिच में भी हल्की सी नमी होगी, क्योंकि सुबह जब पिच के ऊपर वाटर डाल के जब रोल किया जाता है तो फ्रेश विकेट पर ज़रूर नमी देखने मिलेगी। लेकिन ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया आज अपने टीम के लिए। क्रिश फिर एक बार बॉलिंग मार्क पर, इस बार फिर एक बार हवे में, तो यहाँ पर ज़रूर बॉल गया था, बट गैप में खेला गया ये शॉट था और उसी के बीच और एक रन यहाँ पर पूरी होगी। अब नए बैट्समैन हेमल आएंगे। ज़रूर पिच में हेमल को हमने देखा आते ही साथ उन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन यहाँ पर शुरू कर दी है। पहला रन उनके बैट से निकल कर आ चुका है। इस बार क्रिश जरूर अपने लाइन से भटके हैं। लेग स्टंप के बहुत ज़्यादा बार बॉल यहाँ पर लहरा के निकल कर जाएगी कीपर के दस्तानों में। एक्स्ट्रास के रूप में और एक रन ऐड होगा यहाँ पर स्कोर बोर्ड पर। स्कोर बोर्ड पर अगर हम नज़र डालें तो एक विकेट के नुकसान पर 9 रन अभी तक पूरी कर चुकी है नवकार। फिर एक बार क्रिश इस बार पॉइंट की तरफ खेल कर निकाला है, पर डीप पॉइंट पर ज़रूर एक फील्डर तैनात होगा और उसी के बीच और एक रन यहाँ पर पूरा किया जाएगा दोनों ही बल्लेबाजों की ओर से। अब स्कोर बोर्ड जाकर पहुंचा है 10 रनों पर। बेहद ही खूबसूरत ये ऑर्गेनाइजेशन हम देख रहे हैं। सैपियो एनालिटिक्स प्रेजेंस संटार चैंपियंस ट्रॉफी 2025। बेहद खूबसूरत ये कंडीशन, बेहद खूबसूरत टीम्स यहाँ पर खेलते हुए हमें दिखेंगी। इस बार जरूर बॉल लहराई है, पैरों पर जाकर टकराएगी। अपील तो जरूर हुई थी, पर अंपायर्स पे कोई भी उसका असर नहीं होगा। उसी के बीच और एक डॉट बॉल यहाँ पर ऐड होगा टीम जीवा रॉयल्स के लिए। जिस तरीके से मैंने कहा था पिछले भी मैच में क्रिश ने बेहद अच्छी बॉलिंग करी थी, उसी परफॉर्मेंस को अब आगे लेकर जा रहे हैं क्रिश, बट बल्लेबाज भी उतने ही तगड़े हैं उनके सामने। इस बार आगे आकर खेलने का प्रयास, कवर्स का फील्डर थोड़ा सा शॉर्ट पड़ रहा है यहाँ पर, वरना और एक विकेट डाउन होने का चांस था यहाँ पर टीम जीवा रॉयल्स के लिए। क्या बढ़िया गेंदबाजी हो रही है मैदान के बीच। पावर प्ले के बंधन में ज़्यादा बॉल टू स्टंप्स किए जा रहे हैं। बैट्समैन को ज़्यादा स्कोप दिया नहीं जा रहा कोई भी बड़ा शॉट या कोई बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए। उसी के बीच अगर हम देखेंगे तो बैट्समैन के ऊपर भी थोड़ा प्रेशर है यहाँ पर, क्योंकि एक बड़ी मैच है, एक बड़ी प्रतियोगिता है। इसमें परफॉर्म करना दोनों ही टीम्स के लिए बहुत ज़रूरी होगा। फिर एक बार आगे आकर खेलने की मंशा जताई थी, बट बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर अपने बैट का फेस ओपन किया है और उसको सॉफ्ट हैंड से खेल कर निकाला पॉइंट्स की तरफ। अब 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 10 रनों पर। क्या बढ़िया बॉलिंग यहाँ पर टीम जीवा रॉयल्स के दोनों ही बॉलर से हम देखे हैं। एक तरफ अक्षत होंगे तो एक तरफ क्रिश, दोनों ने ही बढ़िया गेंदबाजी की है। चलिए बढ़ते हैं फिर एक बार मैच की ओर, जहां पर 2 ओवर के कंप्लीशन के बाद अब स्कोर जा पहुंचा है 10 फॉर द लॉस ऑफ 1।
बढ़िया गेंदबाजी हो रही है मैदान के बीच में। नवकार टीम भी अपने बल्लेबाजों से यहाँ पर उम्मीद लगाकर बैठी होगी, क्योंकि पावर प्ले का ये बंधन है और पावर प्ले के बंधनों में अभी तक ज़्यादा कोई अग्रेसिव बैटिंग यहाँ पर हमें देखने मिली नहीं है। इस बार पहली ही गेंद थोड़ी सी नीची रही है यहाँ पर कीपर के साथ, फील्डर भी यहाँ पर बीट होंगे और 22 के रूप में और एक रन ऐड होगा, मतलब वाइड +1, ऐसे ये 2 रन यहाँ पर स्कोर बोर्ड में ऐड होंगे। आया आया सर, आया 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 आया, आ गया सर। हाँ, उसने पूरा ही बंद कर दिया था ऑडियो। ठीक है दादा, तुमने बंद कर दिया। हाँ सर, हो गया। चलिए बढ़ते हैं फिर एक बार मैच की और थोड़ी सी यहाँ पर तकनीकी मुश्किल थी जिसको हमने ज़रूर यहाँ पर हल किया है। बढ़ते हैं फिर एक बार मैच की ओर, जहाँ पर मैच हम देख रहे हैं जीवा रॉयल्स वर्सेस टीम नवकार के बीच में। अभी तक टीम जीवा रॉयल्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रही थी, बट अब बैट्समैन ने भी ज़रूर अपने हाथ खोलने की शुरुआत यहाँ पर की है। कवर्स के और के खेल निकाला है यहाँ पर, बट थोड़ा सा फंबल, और उस फंबल के बीच में 1 रन यहाँ पर पूरा करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। खूबसूरत बल्लेबाजी अब मैदान के बीच हो रही है। पहले अगर 2 ओवर्स की बात करें तो बॉलर्स ज़रूर हावी थे बल्लेबाजों पर, बट उसके बाद अब बैट्समैन ने भी पक्का अपने हाथ खोलने की यहाँ पर शुरुआत की है।
टीम नवकार ज़रूर अब 20 ओवर्स के कोटे में कोशिश करेंगे कि 150 से 160 तक पहुंचने की। यहाँ पर फिर एक बार हल्के हाथों से फ्लिक किया है, बट जब तक लॉन्ग ऑन का फील्डर आएगा बॉल पर कोई भी रन नहीं लेगी, यहाँ पर मंशा नहीं होगी दोनों ही बल्लेबाजों की। अब 3 ओवर्स के समाप्ति के बाद अब स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 22 रनों पर। ज़रूर पहले ओवर में अगर हमने अक्षत की बॉलिंग देखी तो एक बढ़िया लाइन एंड लेंथ के साथ उन्होंने बॉलिंग की थी और उसी का फल भी उन्हें मिला था। बट ज़रूर एक सरप्राइजिंग डिसीजन है यहाँ पर कैप्टन का कि उनको अभी रेस्ट दिया गया है, क्योंकि हम ये बहुत ही रेयर देखते हैं जब एक बॉलर अच्छा बॉलिंग करता हो और उसको कैप्टन अपने स्पेल से रुका देता है, बहुत ही रेयर। बट अभी क्रिश आएंगे बॉलिंग के लिए। क्रिश की पहली गेंद यहाँ पर कट की है, बट क्या बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर पॉइंट के, और पॉइंट की दिशा में ज़रूर एक फील्डर तैनात थे। कोई भी रन यहाँ पर नहीं मिलेगा। इस ओवर की पहली बॉल आएगी डॉट। क्रिश ने ज़रूर एक अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, या वो बैटिंग हो या वो बॉलिंग हो। पिछले मैच में भी उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अच्छी गेंदबाजी भी की थी। वही क्रिश अब बॉलिंग मार्क पर होंगे, बट इस बार क्रिश के अगेंस्ट एक अच्छा शॉट यहाँ पर खेला गया है। बट ज़रूर फील्ड रिस्ट्रिक्शंस में भले ही फील्डिंग सर्कल के अंदर हो, पर इस बार अच्छा बॉल गैदर किया है लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर हम देख रहे हैं क्रिश की। पावर प्ले का बंधन है, उसी के साथ स्टंप टू स्टंप यहाँ पर गेंदबाजी देख रहे हैं हम क्रिश की। इस बार बॉल थोड़ी सी निचली रही है, पॉइंट का फील्डर जरूर थोड़ी सी यहाँ पर चूक कर रहा है और उसी के बीच एक रन दोनों ही बल्लेबाज पूरे करेंगे। क्या खूबसूरत ये ग्राउंड है और क्या खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर। एक तरफ अगर आप देखेंगे तो ज़रूर छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी के बीच हमारे सब क्रिकेट एंथुजियास्ट्स मैच का मज़ा लेते हुए। स्पेक्टेटर्स भी बड़ी तादाद में यहाँ पर आ चुके हैं। क्या बढ़िया मैच। इस बार क्रिश ज़रूर चूकेंगे अपने लाइन और लेंथ से, और उसका फ़ायदा यहाँ पर होगा टीम नवकार को। वाइट बॉल यहाँ पर आता हुआ क्रिश के ओवर में। थैंक यू। बढ़ते फिर एक बार मैच की ओर। इस बार कट करने की यहाँ पर मंशा दिखाई थी, पर बॉल में पेस थोड़ा ज़्यादा था। जैसे कहते हैं बीटन बाय पेस, यहाँ पर बीट हो रहे हैं पेस से। कट करने की ज़रूर यहाँ पर मंशा दिखाई थी, बट ज़्यादा कुछ हासिल नहीं होगा इस गेंद पर, और एक डॉट बॉल ऐड होगा। अभी तक मैं कहूँगा बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर देखने मिल रही है क्रिश के ओवर में, और एक बढ़िया गेंद यहाँ पर क्रिश की डॉट बॉल से ज़रूर और प्रेशर ऐड कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाजों पे। ज़्यादा हाथ खोलने का मौका नहीं है यहाँ पर। पावर प्ले का भले ही बंधन हो, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस हो, बट उसी के बीच ज़्यादा कुछ नहीं करने दे रहे हैं दोनों ही बल्लेबाजों को, क्योंकि स्टंप टू स्टंप बॉलिंग यहाँ पर देख रहे हैं। वेरिएशंस बार बार अपनी बॉलिंग में करते। ओहो हो, क्या गेंद थी यहाँ पर। अनलकी फॉर द बॉलर मैं कहूँगा। क्या सुंदर यहाँ पर गेंद लहराई थी बाहर की ओर। आउट स्विंग यहाँ पर ज़रूर किया था क्रिश ने। एज भी प्राप्त हुई थी बल्लेबाज के बैट से, बट बॉल वेकेंट एरिया में से स्लिप गार्डन में से निकल कर जाएगी 4 रनों के लिए। अब 4 ओवर्स के समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 30 रनों पर। पहले ओवर में 29 रनों पर यहाँ पर स्कोर जा पहुंचा है। पहले ही ओवर में ज़रूर एक बड़ा झटका मिला था टीम नवकार को, बट उसके बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने खूबसूरत बल्लेबाजी करते हुए अभी तक अपने पारी को संभाला है, टीम को संभाला है। यही सोच रखेंगे टीम नवकार की ये दोनों बैट्समैन ज़्यादा से ज़्यादा
ओवर्स तक यहाँ पर मैदान के बीच में रहे, अच्छी बैटिंग करे, जिस प्रकार से टीम को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। अब 4 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 29 रनों पर। अब मोक्षित आएंगे, नए बॉलर के रूप में मोक्षित को हम देखेंगे। मोक्षित इस टूर्नामेंट में पहली बार बॉलिंग करते हुए हम उन्हें देखेंगे। पहली ही गेंद यहां पर कवर्स के ओर पर खेल कर निकाला है। स्वीपर कवर पे एक फील्डर जरूर तैनात है, बट बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स दोनों ही बल्लेबाजों की ओर से। 2 रन यहां पर ऐड होंगे। स्कोर बोर्ड इन 2 रनों के साथ अब जा पहुंचा है 31 रनों पर। क्या बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। ओपनिंग से हम उन्हें देख रहे हैं अभी तक का एक अच्छा प्रदर्शन उनके ओर से मैदान के बीच। इस बार अच्छा कमबैक है, यहाँ पर रनआउट किस मौका हो सकता है। बॉलर बैक थ्रो था, बट यहाँ पर चूकते हुए बॉलर, मैं कहूँगा कि वो अपने फॉलो थ्रू में थे और फॉलो थ्रू में से वापस पीछे की ओर भागे थे। और उसी के बीच में अगर हम देखेंगे तो चांस ज़रूर बना था यहाँ पर बॉल स्टम्प्स पर नहीं टकराई और उसी के वजह से यहाँ पर बैट्समैन करेंगे सरवाइव। फील्ड पोजीशन अब बढ़िया यहाँ पर लगाई है स्टंप टू स्टंप बॉलिंग के लिए। और एक बार यहाँ पर पॉइंट का फील्डर बहुत ही तैनात और मुस्तैद, यहाँ पर कोई भी चांस नहीं मिलेगा दोनों ही बैट्समैन को, क्योंकि बॉल जैसे ही बैट पर आके टकराई पॉइंट का फील्डर बिल्कुल ही रेडी और तैनात था। और जब यही एक्सपेक्ट भी करते हो अपने फील्डर से, जब ग्राउंड के बीच में अच्छी बॉलिंग होती है तो अगर फील्डर्स का साथ होता है तो ज़रूर अच्छा यूनिट दिख कर आता है टीम्स का। इस बार मोक्षित थोड़ा भटकेंगे लाइन और लेंथ से। परफेक्ट जा रहे, एकदम बढ़िया जा रहे। वाइट बॉल यहाँ पर आता हुआ और एक, मैं कहूँगा इस इनिंग्स में अभी तक जितनी अच्छी गेंदबाजी हुई है उतने ही एक्स्ट्रास भी आए हैं। तो टीम जीवा रॉयल्स के कैप्टन यही सोचते रहेंगे कि एक्स्ट्रास हमें कम ही देने हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बल्लेबाजी करने वाली टीम का फ़ायदा होता है। इस बार ज़रूर वेरिएशन दिखाया था यहाँ पर बॉलिंग में, कैच का यहाँ पर चांस था, बट जीवन दान यहाँ पर मिलेगा बल्लेबाज को। इस बार देखेंगे तो फिंगर रोल की थी बॉल पर, बिल्कुल आखिरी समय पर बॉल पे यहाँ पर पेस कट ऑफ किया था बॉलर मोक्षित ने। एक चांस ज़रूर बनाया था और हाफ चांस था यहाँ पर, उसको फुल चांस में कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं कवर्स के खिलाड़ी। फिर एक बार मोक्षित, इस बार हल्का से खेलकर निकाला है कवर और पॉइंट के बीच में जब तक के डीप पॉइंट के फील्डर आएंगे 1 रन यहाँ पर बड़े ही आसानी से, बड़े ही आराम से दोनों ही बल्लेबाज पूरी करेंगे मैदान के बीच। जैसे ही हम इस गेम में आगे बढ़ेंगे थोड़ा समय और बीतेगा, यहाँ पर ड्यू एक फैक्टर हो सकता है और जब ड्यू रोल में आता है तो ज़रूर बैट्समैन, बॉलर और फील्डर तीनों के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि बॉल पर हल्की सी नमी देखने मिलती है हमें। इस बार फिर अगर देखेंगे तो गति में किया था परिवर्तन, बट इस बार परिवर्तन को सही से जांचा है, सही से पहचाना है और डॉट बॉल से इस ओवर की होगी समाप्ति। अब 5 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर लग चुका है 32 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार सभी हमारे दर्शकों का स्वागत करेंगे। आप देख रहे हैं संटार चैंपियंस ट्रॉफी, ज़रूर इसके प्राउड प्रेजेंटर है सैपियो एनालिटिक्स। क्या बढ़िया यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन हम देख रहे हैं, खूबसूरत टीम्स, उन्हीं के बीच में ये खूबसूरत मुकाबले, उसी के बीच हम खेल रहे हैं, देख रहे हैं बढ़िया गेम क्रिकेट का,
जेंटलमैन्स गेम यहाँ पर मैदान के बीच में खेला जा रहा है और दोनों ही टीमें अगर देखेंगे तो ट्रू स्पिरिट और ट्रू जेंटलमैन पोस्चर में ये गेम खेलते हुए अभी तक कोई भी कंट्रोवर्शियल डिसीजन यहाँ पर अंपायर्स के ओर से हमने नहीं देखा है। सब कुछ परफेक्टली साउंड और उसी के बीच में ये टूर्नामेंट आगे बढ़ती हुई और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन हो और ऐसी मैचेस हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखने मिली। और क्या लाइव स्ट्रीमिंग भी हम देख रहे हैं ब्लिस प्ले इन्फिनिट पे, खूबसूरत लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पर लाइव के थ्रू 148 कंट्रीज़ में डायरेक्ट स्ट्रीमिंग यहाँ पर पहुँच रही है संटार चैंपियंस ट्रॉफी की। और अगर हम फील्ड पोजीशंस पे एक बार अगर ध्यान दें तो लॉन्ग ऑन है, एक लॉन्ग ऑफ है, एक डीप मिड विकेट है और एक स्वीपर कवर। पहला ही गेंद यहाँ पर ज़रूर बैट्समैन के लिए एक वेकअप कॉल था यहाँ पर बॉलर की ओर से। पिच की ज़रूर बाउंस चेक करने वाली ये गेंद थी। बैट्समैन बिल्कुल बहुत चक्के रह गए इस गेंद को देखते हुए। डॉट बॉल पहला ही यहाँ पर गेंदबाज की ओर से। फिर एक बार ज़रूर मैं कहूँगा बाउंसर करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं या उनको लाइन और लेंथ प्राप्त हो नहीं रही है और उसी के बीच में ये वाइड बॉल ऐड होगा टीम के खाते में। इस बार ज़रूर अटैक तो किया है, देखते हैं फील्डर है वहां पर नहीं रुकेगी गेंद, निकल जाएगी 4 रनों के लिए। ये आता हुआ मैनिसन्स चौका। क्या खूबसूरत गेंद थी यहाँ पर। बार बार अगर हम देखेंगे तो गेंदबाज शॉर्ट बॉल कर रहे हैं बट उसी के बीच अगर हम कहेंगे ना तो कोई भी मौका इस बार बल्लेबाज ने नहीं दिया बॉलर और फील्डर को और बॉल निकल कर जाएगी 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। चौके के बाद यहां पर ये क्या हुआ, जैसे हम कहते हैं ये क्या हुआ, वही होता हुआ मैदान के बीच में। ज़रूर बैट्समैन भी यहाँ पर शॉक्ड, उनके टीम मेट्स भी बिल्कुल शॉक्ड, क्योंकि ज़रूर अटैक करना चाहते थे। यहाँ पर अटैक वाली गेंद भी थी बट अपने सर पर यहाँ पर हाथ लगाते हुए बैट्समैन पवेलियन की ओर बिल्कुल एक स्लो मार्च करते हुए आना होगा। बट जीवा रॉयल्स के लिए अगर कहे तो कुछ भी हो कैसे भी हो विकेट आनी ज़रूरी थी, वो विकेट यहाँ पर आ चुकी है। अब ध्रुमित होंगे नए बैट्समैन, मैदान के अंदर जाएंगे ध्रुमित। अच्छी बैटिंग यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों की हो रही थी बट एक बहुत ही एवरेज बॉल पर यहाँ पर विकेट अपनी खो बैठे हैं बैट्समैन। विशाल को अगर हम देखें तो अच्छी बैटिंग कर रहे थे विशाल बट उनको भी ये बहुत ही शॉकिंग होगा कि किस बॉल पर वो आउट हुए हैं। मैंने जिस तरीके से कहा था पिच अभी फ्रेश है, थोड़ी सी नमी रहेगी पिच पे, उसी के प्रात्यक्षिक में अगर हम देखेंगे ना तो ये बॉल थोड़ी सी फंस कर थोड़ी सी रुक कर आई और जब तक कि बॉल बैट्समैन तक पहुंच पाती बल्लेबाज अपना शॉट खेल कर कंप्लीट स्टांस में आ चुके थे और उसके बीच स्टम्प्स जाकर टकराई स्टम्प्स पे। और बोल्ड यहाँ पर होंगे विशाल जो अच्छी बैटिंग कर रहे थे, ओपनिंग से वो पिच पर थे और अच्छा कंट्रीब्यूशन भी दे रहे थे अपने टीम के लिए। बट इस बार ज़रूर उन्हें लौटना होगा पवेलियन की ओर। अब नया बैट्समैन मैदान के बीच ध्रुमित को हम देखेंगे। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन होगा अब मैदान के अंदर ध्रुमित के रूप में। ध्रुमित आते ही क्या बढ़िया अग्रेशन दिखाते हुए यहाँ पर कोई भी मौका नहीं होगा बल्लेबाज जिस तरीके से बैटिंग कर रहा है, मैं कहूंगा कोई भी मौका नहीं है यहाँ पर फील्डर के पास। बॉल निकल जाएगी 4 रनों के लिए और एक मैनिसन चौका।
ध्रुमित मानो पवेलियन से ही बिल्कुल चार्ज होकर मैदान के बीच में पहुंचे हैं, बिना ही कोई समय लेते हुए ध्रुमित ने यहां पर बॉल को भेज दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। खूबसूरत बल्लेबाजी ध्रुमित की, आते ही एक एग्रेसिव शॉट। फिर एक बार, इस बार सेंसिबल बैटिंग हम उनकी देख रहे हैं। पैरों की तरफ अटैक था और अटैक को यहां पर स्वीकारा है और उसे फ्लिक करके निकाला इस गेंद को, बट फील्डर की ओर से होती हुई और एक चूक मिसफील्ड के रूप में और एक रन ऐड होगा। Today's first match we are watching between Zia Royals and Team Navkar. What beautiful game of cricket we are watching on the iconic Saraswati cricket ground. Suntar Champions Trophy. Oh my God! What a beautiful organization and what a beautiful completion. Another new attack on the bowling field. Nachit comes onto the bowling mark, while Hemal and Drumit, two batsmen, taking the game ahead for their respective franchisees. While we talk about Drumit, what a player he is. The first ball he faced looked like he was there since the last 6 overs. What a beautiful flick off the wrist. But there's a fielder placed over there, because Team Ziva Royals have a complete view of his batting, because he is a very strong and a veteran in Suntar Champions Trophy circuit. People know him for his long innings, people know him for his big hitting strokes, people know him for his sensible batting, people know him for his sensible running between the wickets. Drumit has to stay on the wicket for a good total for Team Navkar. This ball has kept low. This ball has kept very low. But while the ball kept low, umpires also spread their arms and let us know that it is a white ball.
He's on their shoulders, not letting any bowler come over them. Yeah, there's a chance. Fielder is down the ball, and Dhrumat has to depart. Another batsman bites the dust. And is this a commentator's curse? Because Dhrumat was batting pretty well. And before this ball, he did not time or middle any ball this bad. He was perfectly timing every single ball between the pitch, and this fine ball was an attempt to flick the ball, but the ball only managed to go up in the air, and Vishal completes one safe catch. Dhrumat, who was batting pretty well, has to depart. Now Harshit, the new batsman. What beautiful batting we were watching by Dhrumat, but this time, while an attempt to flick the ball, he only managed to put the ball up into the air. But Vishal, who was correctly positioned at his place, makes no mistake, and Dhrumat has to depart. Pradeep, the new bowler on the bowling mark, a left arm spinner, and a left arm spinner is a treat to watch when he turns the ball in front of the batsman's eye. It is a delight to watch. Let's see Pradeep if he manages to do some magic on the field. Both the batsmen are pretty fresh. First ball, the batsman wanted to hoik it over the covers area, but only managed to edge the ball into the bat and pads. Dot ball. Pradeep makes a good start to his bowling. Very next ball, it was a beautiful turn through the pitch. The ball was truly variated very nicely. The batsman had no chance to score a run on this particular ball. Pradeep again onto the bowling mark. This time the batsman wanted to play a scoring hit, but did not manage to do so because the ball was properly handled at the proper flight, the proper pace. Another dot ball. Pradeep till now in this over doing a great job. What a beautiful ball, played with soft hands, but there was shot. Third man placed over there. Pressure on the batsman now because 4 balls, consecutive dots in a row. Is another good stroke played over here, but till the fielder reaches the ball, both the batsmen easily complete 1 run. Now new batsman Harshit will face the first ball in this match. Pradeep doing a good job, has not let the batsman score a big hit out of his bowling. Oh, what a delivery. This was the ball I was talking about. Perfect bounce, perfect spin. No chance for the batsman. While Harshit played the first ball, he was being checked by the bowler. 1 more dot ball.
And after the completion of 8 overs, the score has reached 53 for the loss of 3 wickets. After the completion of 8 overs, the scoreboard has reached 53 for the loss of 3. Today's first match we are watching between Ziva Royals and Navkar. Team Navkar had won the toss and elected to bat first, while Ziva Royals had accepted the challenge and are bowling first. In the field, it is a balanced match, 8 overs and 53. What a beautiful stroke down the ground. Fielder has been placed there. Krish will gather the ball, and in between this, one more run adds to the scoreboard. Once again, Harshit. What a perfect defense. What a great technique and great style. Harshit is a technically sound batsman, and that's what we are viewing on the field. We could say this was a perfect front foot defense shown by Harshit. This was a variation. While delivering the ball, the bowler had rolled his fingers on the ball, and this was a leg cutter. And between that, Harshit bites the dust, and one more wicket goes down for Team Navkar. As we see, Harshit has to depart, and his place will be taken by Akash. What a beautiful effort here by bowler, but he could not stop a single run, and Akash starts his own account with a single down the ground. Wickets have been falling on regular intervals. Batsmen have been not given a scope to score big runs or big boundaries or sixes. That is only due to a beautiful bowling attack Team Ziva Royals have presented in this match. This time played with soft hands, no scope for a single run, another dot ball. So we can see the batsmen are clearly batting into pressure. On one end we can watch Hemal, and one end there's Akash. Akash, who has walked in now onto the field, has to do something magical for his team because scoreboard has been very shaky for Team Navkar. This time there's another change of pace, but the ball will be stopped in the circle. The covers fielder comes on and stops the balls. After the completion of 9 overs, the scoreboard now reaches on 56.
of the best spinners of Suntar. Now Pradeep on the bowling mark. एक स्लिप के साथ स्टार्ट करेंगे. And now as Pradeep witnesses the both batsmen are fresh to the pitch, he introduces another slipper for the batsman, because he knows that both the batsmen are new to the crease and playing big hits will be difficult on his bowling. And here we watch Pradeep again on the bowling mark. What a beautiful ball! We can see spectators also giving him a clap. Perfect piece of bowling, perfect flight and perfect turn given by Pradeep. This time he wanted to cut the ball, but manages only to play towards covers. One more run will be added on the scoreboard. Pradeep makes full use and advantage of the pitch. Another beautiful ball. No chance for the batsmen to play any big hit. Pradeep leaves no scope for the batsmen to charge at him. Another beautiful ball. It was अल्पेश द्वारा काफी शानदार फील्डिंग. near and close to the slipper fielder, अल्पेश भाई द्वारा काफी शानदार फील्डिंग. but the fielder could not complete the catch, and another single will be added to team's total. Pradeep has changed his gears and he is getting more and more aggressive. As Pradeep finds that both the batsmen are new to the crease, he manages to put in another slip. This time the ball was a bit short. The batsman managed to place it towards point direction. One more run will be added into the team's scoreboard. नवकार के ड्रेसिंग रूम से मैसेज क्लियर है. पैडी का ओवर निकालो, एक रन लेकर. Beautiful piece of bowling we are watching from Pradeep. This ball, what a beautiful ball, beats the outside edge and moves on to the keeper's gloves. Another successful over for team Ziva Royal completed. And after the completion of 10 overs, the scoreboard moves on to 58 for the loss of 4 overs. The match is completely balanced. First half of this inning has been completed. After the drinks break, we go on to the next half of the first match played between Ziva Royals and Team Navkar.
Let us move on again to the match. After the completion of 10 overs, the scoreboard, as we see, has reached on 58 for the loss of 4 wickets. Hemal and Akash, both the batsmen doing their job on the field. Now Pranit was a new batsman, new bowler, pardon. I beg your pardon. On the first ball there was an edge. The ball went towards third man region. Another full toss, this time played towards the cover region. The long off fielder makes a big chase and successfully stopped the ball, and in between that 2 runs add to the scoreboard. Let's move on to the next ball. There was an attempt to cut this ball, but shortly pretty much outside. Off stump, the umpire spreads his arms and let us know that it is a white ball. Both the batsmen, Akash and Hemal, have to stay on the wicket. Another beautiful ball placed towards the cover, and until the ball reaches till the bowler, one more single run completed by both the batsmen. Beautiful piece of batting here we are watching now. In between the wicket, both the batsmen playing a good hand. This time played into the vacant area, but the bat fielder covers the ground and manages to give away only a single. Now the match and this inning, as we see, is placed at a very balanced situation. Both the batsmen trying to make a charge, but bowling has been beautiful. But this time batsmen tried to attack but could not manage to do anything more. Another wicket goes down. Team Navkar now in deep trouble. And Akash has to depart, makes his way towards the pavilion end, could not manage to do anything, and only managed to gather 5 runs out of 8 balls for his team, Navkar. Now the score reaches on to 64 for the loss of 5 wickets. Now to replace Akash, we will see Parth going on to the batting end. Beautiful bowling till now by Pranit. Has not given away much runs or much extras. He has completely blocked the batsmen by all ways possible, because an attempt was made against him to score an aggressive stroke, but the covers fielder makes no mistake and completes the catch. Beautiful stroke by the batsman Parth. As we saw him facing his first ball, he completely opened the face of his bat and played it towards covers and completed a beautiful single. Now Parth and Hemal, both batsmen, take the charge for the team Navkar.
Now if you see Parth and Hemal have to do or if we say have to contribute for their team, as the scoreboard now moves on 65 after the completion of 11 overs. 11 overs के बाद स्कोर है 65 on the last of 5 wickets. बॉलर आ रहे हैं आकाश वेलानी 12th ओवर लेकर आ रहे हैं. पिछले मैच में 4 विकेट लिए थे इन्होंने. It's a no ball. Very first ball handled by Akash was a beamer सबसे पहला बीमर होगा. which lands directly into the hands of the keeper Vicky. Everyone was very shocked because the same bowler has completed 4 wickets in the previous match. He has to learn from his mistake. And this time Parth tried to hike the ball over the long on area but only managed to play a ground stroke. And I'll take the fielder gathers the ball. 1 run will be added to the team's scoreboard. Akash, the same bowler who had completed 4 wickets in the previous match, and this match very first ball by him was a nasty beamer. But the very next ball he manages to learn from his mistake and gets back to his perfect line and length. This time there's an edge. There's the fielder over there. काफी बढ़िया स्टॉप अल्पेश द्वारा. Alpesh, a bit of we can say fumble by him, but the batsman stays calm and poised on a single. बाद में ये ओवर के बाद. Now Parth on the batting end. Another edge, but this time I feel Alpesh makes a big chase but will not stop the ball. One more, Manison's boundary. There was an edge, but surely Alpesh could not stop the ball, and the ball manages to get out for 4 runs. Let's go back to the live action where Akash is trying to get out batsmen, but they are managing to get edge. Oh, this time there was another attempt for a nasty bouncer, but this time surely the wicket keeper gets beaten and one more run will be added in the form of Bliez. Akash had surely delivered a beamer on the first ball of his spell, but after that makes a comeback and delivers pretty good deliveries. This time it was a full toss played towards the long on region. Beautiful piece of fielding, and as we see another single adds to the team's scoreboard. I feel this would be the last delivery of this particular ball. Oh, a good stroke played here, but the point fielder beautifully placed makes a throw, and a proper backup by team Ziva Royals. After the completion of 12 overs, the score has reached at 74 for the loss of 5 wickets.
Now as we see, Pradeep has been made to change his end. Now he will shortly change the end for his next over. Very first ball, I feel there was an edge or what. Let's wait for the umpire's decision. Both the umpires will surely discuss, will surely share a word. Let's see what happens. Till then, I welcome all our beautiful spectators. Happy Analytics presents Suntar Champions Trophy 2025. This is the first match played between Team Ziva Royals and Team Navkar. Team Navkar had won the toss and elected to bat first, while Team Ziva Royals are bowling. And yes, the umpire gives his decision. Batsman has to depart. Beautiful piece of bowling by Pradeep. One more wicket goes down. Now Hemal has to depart. He was batting pretty well. He was there since a long time, but Hemal also bites the dust and falls a prey to beautiful piece of bowling by Pradeep, and what a beautiful catch in the slip area. Now Jainam, the new batsman, enters the field. Pradeep continuously bowling perfectly onto the field and towards the batsman, gives no scope to score big runs, and due to that, batsman continue to fall prey on his bowling. Now Jainam, the new batsman, between the field, another left-hand batsman. Jainam. Pradeep, as we see, there was a definite edge, but the umpires shared a word, discussed the situation properly, and gave the decision that yes, the batsman is out. You can also watch the replay if you want, because a perfect live streaming has been provided by Bliez Play Infinite. What beautiful live streaming through YouTube. 148 countries could directly watch the match, and with the help of technology, things have got much easier. Now the new batsman Jainam, left-hand batsman versus the left-hand bowler. Good competition to watch. Very first ball onto the pads. Appeal. I would say it was a half-hearted appeal, because the bowler Pradeep had already analyzed the entire situation in his mind and did not appeal for this ball, because the ball was drifting towards the leg stump. Another beautiful ball. The keeper makes a mistake. The chase is on between the fielder and the ball. Yet again, ball wins the race. Another boundary. Umpire also signals bye. So I feel it was a bye, and the wicket keeper, as we saw, completely beaten by the pace, could not do much, while the ball moves away to the boundary line for 4 runs. If we take a look on Pradeep's bowling, a complete all-round package. Another beautiful ball, another appeal. Let's say umpire not impressed, not satisfied with the appeal, or maybe even the ball was drifting much more outside the stumps. Jainam survives.
This time Jainam takes his front foot out of his crease and properly defends this ball. Another dot ball completed. Beautiful piece of bowling, and while ball reaches till the fielders, both the batsmen complete a single run. Or beautiful bowling we are watching by Pradeep. He has completely locked both the batsmen or any batsman entering the ground. Till now we haven't seen a scoring stroke in Pradeep's over on Pradeep's spell. That is only because of his control and precision on his bowling. Definite gamble, Pradeep, as we see tries to gather wickets more than completing his overs. After the completion of 13 overs, the scoreboard has now reached on to 79 for the loss of 5 wickets. Now Alpesh onto the bowling mark. Another good player, another all-round package. Very first ball, Alpesh strikes, and now Jainam has to depart. Very first ball of his quota, of his spell, delivers perfectly onto the stumps, and Alpesh completes first wicket on the first ball of his bowling over. Let's move on once again to the live action, where Alpesh strikes on the first ball. What beautiful piece of bowling we can say by Alpesh. Very first ball of his quota, and Jainam had to depart. Jainam could not manage to contribute much for his team. He never looked comfortable in between the wickets. That is only and only because of the beautiful bowling by Team Ziva Royals. Now Alpesh ready to deliver second ball of his spell. Oh, but this time surely the ball drifts towards the leg stump, and another white ball added to the team's scoreboard. Flighted ball, but the batsman only manages to hoik the ball into the air, and one more wicket goes down. Beautiful bowling by Alpesh. The wicket on the first ball. Then he delivered a white ball, but then makes a comeback and wicket on the second ball as well. And now Vratang, the new batsman, goes in. Kunal could not do much for his team and has to depart. It was a complete change of pace, a complete change in the bowling action as we saw. The ball was handed very flighted, and Kunal had no chance at all. Kunal has to depart. Now the new batsman, Vratang.
Let's move on again to the live action where Alpesh has started to make his mark. Has taken 2 wickets and 2 balls. There was another chance, but this time the ball pretty much outside the off stump. Another white ball. Another good delivery here. The keeper has made an appeal. Let's see what the umpires have to say. Umpire's signal not out. The batsman Vrtank survives. Once again, Alpesh onto the bowling mark. Vrtank has been beaten into the air on the first 2 balls. This time another undercut. Let's see, is there a run out opportunity over here? And here's a direct hit. But the batsman safe in his zone. Alpesh still now in this over has been pretty successful, has concealed a wicket, has not even given any chance to score big. There was another beautiful ball. The batsman had no answer to it. The keeper also beaten by the pace. What beautiful bowling Alpesh has been showing. Gives no scope and no chance to the batsman to score big. This time run out chance, but no. Both the batsmen survive. I feel the throw was at the wrong end. Pradeep tried to throw the ball for the run out. And now after the completion of 14 overs, the score as we see moves on 83. While the wickets have been falling at regular intervals and 8 wickets have been concluded to reach 83 runs. Bowler name? Pradeep into his last over of a spell. Batsman to face him will be Parth. Now Parth has to surely change his gears to score big for his team, because his team Navkar is into deep trouble. The scoreboard is still at 83. Pradeep yet again gets in a slip because this is his last over into the spell. Pradeep versus Parth. Very first ball, full toss. The fielder makes a chase but falls short, and Parth now changes his gears. What a beautiful shot over covers. There was a sweeper placed there, but the fielder had no chance because the ball was timed very well from the middle of the bat. And first scoring hit of Pradeep's bowling. Parth is looking very well, has started to change his gears. This time Pradeep makes a comeback, delivers the ball a bit slower into the air. Parth survives.
What a beautiful delivery yet again by Pradeep. Even if he conceived, a boundary of his first ball, Pradeep shows some guts to throw the ball up in the air. This ball was very short. The fielder coming under the ball stops his run up in between, and while all this happened, Parth survives yet again. This time the batsman wanted to play the ball towards covers, but bowler Pradeep gives him no chance. Another dot ball. Will Pradeep complete another wicket in his spell? Interesting thing to watch. This time played through the cover, so delivered, but the batsman survives. And after the completion of 15 overs, the score now moves on to 88 for the loss of 8 wickets. Now as we move into the final 5 overs of this inning, we see Akshat on the bowling mark. Last 5 overs left in this inning. Akshat the new bowler. Parth still between the wickets. A good batsman can score runs. Oh, another good stroke into the vacant area. The fielder makes a chase but falls short. Here's another Madison boundary like a tracer bullet. Team Navkar have surely put on all the hopes and expectations on Parth, because he's timing the ball pretty well ever since he has been to the ground. But this time Akshat had delivered a beautiful ball. There was change of pace, but the falls where there was no man placed. Once again Parth survives. Akshat, another good bowler I have seen in the Suntar Champions Trophy. Delivers complete ball to ball, stump to stump. What a shot! What a shot! What a beautiful stroke over the mid-wicket range. And here's another Madison boundary for 4 runs. Beautiful batting. Now Vritang opens his arms and hoiks the ball over the mid-wicket range and gathers 4 runs, 4 important and crucial runs for his team. Now after the stroke, field has been changed. Another attempt of a big stroke, but all he manages to
to complete a stroke into the hands of Rachin, and Vritank has to depart after playing a good hand. Now the team is into deep trouble because the wickets have been falling on regular intervals, and Akshat once again makes a comeback and delivers for his team. This time pretty much outside the off stump. Another white ball, and I feel one last wicket remaining in this inning. The important thing to watch is that Team Navkar, can they go past the 3 mark figure? Another ball hit into the air, and the fielder completes one more wicket. And now the inning comes to an end. Mokshit completes a beautiful catch. And Team Navkar falls down only for 99. And 99 will be the target for Team Ziva Royals when they come onto the field to bat in the next innings. Let's meet after 10 minutes.
Let's get back to the live action. Team Ziva Royals and Team Navkar. What a beautiful match. The first match of this day. Team Navkar have managed to put on 99 runs on the board. Alpesh will face the first ball of this match. Here the chase began. For the first ball, Alpesh has to depart. What a beautiful ball it was. It had pace, it had bounce. Alpesh back to the pavilion. Team Ziva Royals lose their first batsman. Jimit on the very first ball of his spell strikes big as Alpesh had no chance to play this ball. The ball brushed his gloves and went on to the keeper's gloves. First wicket goes down in the form of Alpesh. Now team Ziva Royals in deep trouble as the first batsman bites the dust on the very first ball of the match. Jivit strikes on the very first ball. Now Krish on the batting mark, another sensible player, an all-round performer for Team Ziva Royals. A handy all-rounder, bowls at various positions, bats pretty sensibly. Chris has to make a mark for his team now. Another great ball from Jivit's bowling, and he is not giving any scope for the batsman to make a charge. Handling the first over of the power play and the first over of this innings, Team Ziva Royals have to complete 99 runs to prove victorious, but boy, the bowling unit of Navkar is a strong unit. This ball kept low, appeal was indeed made, but an half-hearted appeal. Jivit now charged up as he has striked on the very first ball of this match. Alpesh, who had bowled pretty well, could not do much in his batting. Here again, Jimit in the bowling mark. There was a full toss this time, but Krish only manages to play it down to the long on area for 1 run. And now the run chase in true manners have begun as the scoreboard moves on to 1 for the loss of 1. Once again, Jimit. What a beautiful stroke. Very first ball timed into the middle of bat. But Team Navkar won't feel affected by the stroke because it was a dot ball, and after the completion of 1 over, score now 1 for the loss of 1 wicket. Now Vrtank
on the bowling mark. Very first ball. What beautiful pace. The ball carries towards the keeper like a spear gun. Vratank on the bowling mark now, and indeed team Navkar have made a good start. Only one run on the scoreboard now. The target is pretty small, but then you have to bat in that manner to complete those 99 runs. But what beautiful piece of bowling, continuously handled by Team Navkar's bowlers, giving no scope, no chance for the Ziva Royals batsmen to open their arms. Just on the ball has kept low, tries to take a cheeky single, and both the batsmen complete a good run between the wickets. Good running, I would say, by both the batsmen, not trying to play any ram shot or any aggressive hitting, just trying to tuck the ball wherever it's needed for a single, and also are gathering proper boundaries where there was a chance.
Vrutang with a very big run up from the 30-yard circle. There was a change of pace this time. Krish gets beaten by the surface. He tried to cut the ball, but the ball did not have enough legs to reach his sweet spot of the bat. And after a dot ball, the over completes. And after the completion of 2 overs, the scoreboard moves on to 10 for the loss of 1. What a beautiful stroke and what a piece of fielding here at point. No chance for the ball to go towards the boundary line due to a perfect effort by the point fielder. Krish and Karthik, both batsmen taking the charge, and this time another attempt to complete a single, but no chance for the batsman as Team Navkar shows brilliance onto the field, not giving away easy runs, not letting the batsman to play any big hits. Beautiful match. The viewers will also enjoy this match while live streaming. This time the bowler misses his mark and the ball pretty much outside of stump. One more white ball conceded. Beautiful bowling, I would say here. Another attempt of a cheeky single and 1 run will be completed easily. Krish and Karthik, both batsmen, giving away everything for their team. Ziva Royals, because it is an important match. It is an important tournament. And as the sun has completely set into its position, we see a night match. Now another full toss. Here it was for Krish. I would rather say it was a gift, but he only managed to complete a single run on this ball. Krish is also timing the ball pretty well. This time he has selected the long off region. Fielders making a big chase, but the ball won't stop. One more. Manningson's boundary. The ball travels out of the boundary line for 4 runs. Great piece of batting by Krish and Karthik in between the wickets. Now after the completion of 3 overs, the scoreboard moves on to 19, and after the first wicket, as we saw, Alpesh had to depart as it was a beautiful delivery. Both the batsmen, Krish and Karthik, managed to
take a charge for their teams, trying to take their team towards a victory zone. Now, after the completion of 3 overs, the scoreboard now moves on to 19 for the loss of 1 wicket. Now, Krish, pardon, it's beautiful ball from Parth here. Another left arm spinner, as we saw. It was Pradeep from the team Ziva Royals who was perfectly delivering the ball where he wanted to. Also conceded wickets in his spell. Now Parth for team Navkar. What a beautiful ball! The wicket also helped him to get this turn and bounce. But if there was a slip, Chris had to depart. Beautiful piece of bowling by Parth as well. There's turn into this pitch, there's bounce into this pitch. What a beautiful ball. Krish wanted to tuck this ball towards the square leg region, but only managed to conceive another dot ball. Karthik trying to release some pressure, but Parth on the other end continues to build up pressure as he is giving no scope and no room for the batsman to score any runs. He's bowling wicket to wicket, bowling in and power play with a new ball in hand. As we have seen many years, the work was being done for the Indian team by Akshar Patel, who usually bowls into the power play, makes use of the pitch, makes use of the wicket. And that's how he's been in that circuit for a long period of time. And here, as we see, Parth is doing that same job for team Navkar. Another beautiful delivery, but this time the ball moves ahead into the vacant area. Krish and Karthik taking the charge and taking the lead for the particular teams. And after the completion of 4 overs, the scoreboard moves on to 21 for the loss of 1 wicket. Another change into the bowling. Now Vishal comes on the bowling mark, and Krishnan Karthik still onto the batting pitch. What beautiful middling of the ball, complete pressure releasing work done by both the batsmen. Oh, this time there was a different attempt to score a run, and Vishal's first ball on the money, on the mark, no chance for the batsman to score any run. Vishal to Krish. This time hiked the ball towards the deep mid-wicket region, and both the batsmen settle down for a single.
Now Krish onto the batting end. Vishal trying hard to break this partnership. Oh, this time Krish wanted to make some room to play the shot, but could not manage to gather any run. Great bowling by Vishal till now in this over. This time, a pretty much flighted ball. Fielder has been placed on that particular area. One more run completed out of Vishal's bowling. Vishal to Karthik now. Oh, this time, what a shot played. Just flick of the wrist. The ball won't stop. The ball moves out of the boundary line for a Manison's boundary. Now the scoreboard slowly and steady moving ahead as both the batsmen take the charge. They have been playing good strokes, leaving no scope for the bowlers to make any pressure on them. Another good stroke towards mid-off region. One more run completed, and Vishal completes the first over in a spell. And after the completion of 5 overs, the scoreboard now moves on to 28 for the loss of 1 wicket. Let's move on once again to the live action onto the field, and now Parth comes on from another end. This time Parth makes an valiant effort but falls short, and one run completed. Krish and Karthik taking their team towards a victory. Team Navkar in search of a wicket to break this partnership, but Krish and Karthik giving no scope. Playing a good knock for the team Ziva Royals. Change of pace this time. Was there an opportunity to get stumped? The umpire signals not out, and Krish survives.
This time it was a full toss. Krish flicked his wrist and gathered another Manik's boundary. Beautiful piece of batting in the middle by Krish and Karthik. My God, what a player and handy all-rounder who bats at any given position, who bowls at any given position. That's Krish for you. Now surely there's pressure on Parth now. Another full toss and again it's been put into the gap. There's the fielder over there. What a good effort. And between that, 2 runs more will be completed. Krish paying a good nod for his team. What a beautiful knock. Both the batsmen are gathering singles, boundaries or big strokes at any given point because they know it is an important match for them to win. Another flighted delivery invited the batsman to play a big shot coming onto his front foot, but there was no scope. Let's see, there's a misfield and another run conceded on the misfield. Parth a bit upset on this effort. Once again, there was a chance because the ball once again got caught into the pitch and the batsman had to wait until the ball came to him and another over done. And after the completion of 6 overs, the scoreboard now moves on to 37 for the loss of 1 wicket. Here we are watching Sapio Analytics present Suntar Champions Trophy 2025. A great organization and great teams playing this tournament. We are watching Ziva Royals and Team Navkar. In this ongoing match, you can watch this sport live on Bliez Play Infinite YouTube channel. Another great platform to stream your live events. Krish and Karthik still there in the middle like Mount Everest for their team, playing a good knock. Now there's a bowling change. Very first ball tucked away very nicely towards square leg region. Another single concluded by both the batsmen. Once again, there was an attempt to cut the ball, but the keeper gets beaten. The chase is on. What a brilliant effort. But the effort once again falls short. And here's another boundary in the account of Krish.
Sensible batting by Krish because he knew that there's a opportunity to hit a big sixer. He did that, and in the very next ball, it was a good ball handled by the bowler, so just played it towards the point region. Dot ball. Played it to the covers region. The fielder fields the ball. No chance for a single. Chris is playing an important knock for his team. Ziva Royals has already conceded a sixer in this over. It was a good ball. Chance of a run out, but the keeper. I feel what's happened into the middle. The umpires would take some time to discuss, and I feel the umpire has given his decision, and the batsman has to depart in the form of run out. I would say an unfortunate departure for Akash because the ball had already touched the keeper's glove, and after that it went on to hit the stumps. So technically that's a run out. Akash has to depart. Batsman gone in. Picky, the new batsman, into the middle. Scoreboard now 54 for the loss of 4 wickets. Vicky has to stay into the middle if they want to win this match. Very first ball, a defensive mode on by Vicky. He let this ball pass towards the keeper as he is new to the pitch. No risk taken. Now slowly and steadily, Team Navkar making a comeback into this match. This ball took an unexpected bounce. The ball has been sent into the gap. The fielders are making a chase. Let's wait for the umpire's decision. Before that, the ball has been stopped by both the fielders. 2 more valuable runs added to the team's scoreboard.
After the completion of 9 overs, the scoreboard now on 54 for the loss of 4 wickets. Once again, Parth on the bowling mark. A good delivery, a flighted one. The fielders are running to stop the ball. A valiant effort, and the ball has been stopped under the boundary line, and one more run added to team's scoreboard. Team Ziva Royals now marching towards the victory. Now the new batsman Vicky onto the batting mark has to put some punch in this batting lineup. Another flighted delivery. No chance for the batsman to free his arms and play a big stroke. Another great delivery. Tried to cut it, but the fielders have stopped the ball successfully. No chance to complete a single. Good bowling, I would say, from Parth is giving no room and no scope for the batsmen to play a big hit. This ball was a bit quicker into the air. It skidded and went towards the keeper's gloves. Good bowling by Parth. Now there's a fielding change for Vicky. One fielder from the leg side region has been brought into the circle. Oh, what a great delivery. There's an appeal, but your height would be the factor. The umpire shows that yes, it's a bit Parth doing a great job for his team, not letting the batsmen concede any easy run out of his bowling. Once again tried to cut the ball, but there was a fielder placed at the correct position. Please be ready for the toss. And as we see, there was an attempt to cut the ball, but as there was a fielding 10 ओवर की समाप्ति का स्कोर है 57 for 4 wicket. After the completion of 10 overs, now the scoreboard moves on to 57 for the loss of 4 wickets. Now last 10 overs in this match, a great contest between two great teams.
Let us move on to the live action once again. A flighted delivery for Krish, and he easily plays it towards the long on region. Another run added to his individual scoreboard. Krish and Akash, both the batsmen doing a good job for their team, Ziva Royal. There was a good spin, but the keeper misses the ball. There's a chase going on between the bowler and the fielder, but the ball wins the race. Outfield pretty fast, and wide +4. 5 runs concede in this particular delivery. Once again, here let's see, there's an appeal, a loud appeal, but umpire unaffected. Not out. A great delivery here again from the bowler Akash. Just tried to chop it, but the fielder at the covers completes a good fielding. This time quicker in the air. One more dot ball.
Again, see the keeper. Ziva. 67 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। इसके आगे की कमेंट्री हम जरूर दोनों कर रहा है। अब इसके बाद आगे की आंखों देखा हाल हम देखेंगे और सुनेंगे हिंदी में। अभी भी यहां से कुछ रनों की दरकार होगी टीम जीवा रॉयल्स को। क्या बढ़िया गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर नवकार की भी। ज़्यादा कुछ करने का मौका नहीं दे रहे यहाँ पर बल्लेबाजों को, पर बल्लेबाज भी उतने ही सूझबूझ भरी पारी खेलते हुए बिल्कुल ही सिचुएशन को अपने हाथों में रखकर अच्छा गेम यहाँ पर मैदान के बीच चल रहा है। क्रिश अभी भी मैदान के बीच बहुत ही अच्छा नॉक खेलते हुए अपने टीम के लिए ज़्यादा कुछ रिस्क नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा डेफ टच मैं कहूँगा जो खेल कर निकाला है शॉट थर्ड मैन की ओर। रन तो नहीं होगा, दोनों ही बल्लेबाज किसी भी तरीके की यहाँ पर खाई नहीं करना चाहेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि ये मैच अभी हमारे कंट्रोल में है। अगर हम विकेट्स यहाँ पर नहीं जाने दे तो ये मैच एक कन्विंसिंग जीत कहलाई जा सकती है टीम जीवा रॉयल्स के लिए। इस बार थोड़ा आगे यहाँ पर बॉल लैंड होते हुआ कवर्स के क्षेत्र रक्षक के लिए यहाँ पर आकाश और क्रिश ये जोड़ी मैदान के बीच अपने टीम के लिए अच्छा कार्य करते हुए। इस बॉल और एक डॉट आएगा। बल्लेबाज और गेंदबाज के बीच छिड़ी ये जंग देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा कि कौन इसमें विजय प्राप्त करता है। इस बार और एक सामने की ओर खेला गया ये स्ट्रोक। अब ये चौथा बॉल डॉट आता हुआ इस ओवर का। जितने डॉट बॉल्स आएंगे उतना ही प्रेशर यहां पर बिल्ड होगा टीम जीवा रॉयल्स का। क्या खूबसूरत ये मैदान है, क्या खूबसूरत यहाँ पर लाइट्स की अरेंजमेंट। और एक बार डेफ टच करने के प्रयास में थे यहाँ पर आकाश, बट बॉल की गति थोड़ी सी क्विक, उसके बीच और एक डॉट बॉल। अब गति में परिवर्तन किया था और शॉट खेलने के प्रयास में यहां पर बल्लेबाज जमीन पर ढेर। 13 ओवर के ये मेडन ओवर था आकाश के द्वारा। गुड बॉल। क्या बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर आकाश की। इस बार में बोला जाए एक मेडन ओवर क्रूशियल टाइम पे डिलीवर करते हुए गेंदबाज। बॉलर हिमल जैन, हमारे 6 के स्पॉन्सर है ग्लोबल स्पोर्ट्स, हिमल जैन, दिव्येश जैन, नीरज जैन। अब हिमल आएंगे बॉलिंग मार्क पर, जरूर हमारे प्राउड स्पॉन्सर भी है।
हमारे सिक्सर्स उन्होंने स्पॉन्सर किए हैं, तो ज़रूर बल्लेबाजों को यही दरख्वास्त होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सिक्सर्स खेलें, क्योंकि हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स खुद प्लेयर भी है। बट अब हेमल ज़रूर चाहेंगे कि उनके गेंदबाजी पर कोई भी 6 रनों के लिए बड़ा स्ट्रोक ना आए, क्योंकि ज़रूर अभी वो एज अ प्लेयर ग्राउंड पर उतरे हैं और किसी भी बॉलर को अपने बॉलिंग पर 6 रन आना पसंद नहीं होता। अब हेमल आएंगे बॉलिंग मार्क पर। क्रिश और आकाश अभी भी मैदान के बीच तैनात अपने टीम जीवा रॉयल्स के लिए अच्छी पारी खेलते हुए दोनों ये बल्लेबाज। हेमल की पहली ही गेंद बिल्कुल सटीक निशाने पर, कोई भी चांस नहीं था यहाँ पर क्रिश के लिए कि वो थोड़ी सी चहलकदमी कर बड़ा स्ट्रोक खेले। और एक बॉल आएगी डॉट। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने की प्रयास में जरूर थे बल्लेबाज। क्या बढ़िया यहाँ पर विकेट कीपिंग स्टंप्स के पीछे हमने देखी, वरना जरूर और एक रन मिसफील्ड का ऐड होता। विकी और क्रिश मैदान के बीच। यहाँ पर क्या बढ़िया स्ट्रोक खेला है, बट यकीन है वहाँ पर जब तक के बॉल उठाएंगे या बॉलर के हाथों में फिर एक बार थ्रो करेंगे, 1 रन यहाँ पर पूरा होगा। विकी और क्रिश इस बार बड़ा स्ट्रोक तो खेला है, बॉल बहुत ही ऊपर ध्रुमित बॉल के नीचे आ रहे थे, बट शॉट यहाँ पर उनकी ये प्रयास शॉट रहेगा। जरूर अगर ये कैच पूरा होता तो एक महत्वपूर्ण धक्का यहाँ पर लगता टीम जीवा रॉयल्स को। क्या बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर हो रही है हेमल की ओर से। अभी भी कोई बड़ा स्ट्रोक खेलने का मौका नहीं दिया है विकी और क्रिश को। मैं कहूँगा बढ़िया गेंदबाजी हो रही है अभी तक। ये क्या गेंद थी यहाँ पर, ज़रूर बिल्कुल एक्सप्रेस डिलीवरी जिसे कहते हैं वही यहाँ पर करते हुए हेमल। कोई भी मौका नहीं था यहाँ पर बल्लेबाज के पास कि वो बड़े स्ट्रोक को यहाँ पर अंजाम दे पाते। इस बार आगे आकर खेलने का ये प्रयास, यकीन है वहां पर 1 रन और ऐड होगा। अब 14 ओवर के समाप्ति पर स्कोर बोर्ड अब जा पहुंचा है 73 रनों पर। पावर प्ले का इशारा अब आता हुआ अंपायर की ओर से। 14 ओवर के बाद 73 रनों पर 73। आकाश जब आएंगे बॉलिंग मार्क पर। 36 गेंदें और 26 रनों की यहाँ पर दरकार होगी टीम जीवा रॉयल्स को। अभी भी दोनों ही टीम के लिए ये मुकाबला बैलेंस सिचुएशन में है।
यहाँ से 1-2 विकेट अगर आती है टीम जीवा रॉयल्स की तो ज़रूर मुकाबले में मज़ा आएगा। सामने की ओर खेल कर निकाला इस बॉल को, ध्रुमित है वहाँ पर, और विकी अब ज़रूर अपने गेयर्स बदलते हुए 1 रन और ऐड होगा टीम के स्कोर बोर्ड में। अब क्रिश होंगे बैटिंग एंड पर। यहाँ पर क्रिश ने ज़रूर थोड़ी सी जल्दबाजी की है, बट और एक बार क्रिश को मिलेगा जीवन दान। ज़रूर आज क्रिश सुबह सुबह मंदिर जाकर आए होंगे कि भगवान उन पे इतना खुश है कि उनको बहुत मौके आज के इस मैच में दिए गए हैं। अब उन्हें इन चांस को कंप्लीट करना होगा इस मैच विनिंग इनिंग में। विकी का ये प्रयास, बड़ा हिट लगाने का, बॉल निकल जाएगी 4 रनों के लिए। मनी से बाउंड्री आती हुई विकी के बैट से, क्या बढ़िया स्ट्रोक यहां पर खेला है विकी ने। आकाश के ऊपर जरूर आक्रमण किया है अभी, और एक बार आक्रमण तो किया है, इस बार फील्डर है बॉल के नीचे, लेकिन और एक जीवन दान मिलता हुआ अब विकी को। आकाश अब ये सोच रहे होंगे कि करे तो करे क्या, क्योंकि उन्होंने ज़रूर चांस भी बनाए हैं, उन्होंने मौके ज़रूर यहाँ पर उत्पन्न किए थे। इस बार और एक जोरदार स्ट्रोक, यहाँ पर नहीं रुकेगी गेंद, चली जाएगी 4 रनों के लिए। ये आता हुआ मनीसंस चौका। इस बार और एक बड़ा स्ट्रोक खेलने के प्रयास में थे यहाँ पर क्रिश। बॉल थोड़ी सी नीची रहती हुई एक एज लगकर कीपर की ओर निकल कर जाएगी। अल्पेश भाई, हेमल बॉलिंग कराएंगे अभी। हेमल सामने की ओर और एक अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर क्रिश के बैट में से। क्रिश और विकी अभी बहुत ही सूझबूझ भरी पारी अपने टीम के लिए खेलते हुए, कोई भी द्विधा मंशा में नहीं है, दोनों ही बल्लेबाज एक अच्छी पारी यहाँ पर बड़े स्ट्रोक के लिए गए हैं इस बार विकी, बट फील्डर नहीं पहुंचेंगे बॉल तक। उसके बीच और एक
रन ऐड होगा टीम के स्कोर बोर्ड में। इस बार थोड़ा सा रैम्प शॉट खेलने के प्रयास में थे विकी, थोड़ा सा मैं कहूंगा संयम खोते हुए यहां पर। इस बार गति में जरूर परिवर्तन किया था, लेग कटर यहां पर देखेंगे, बट ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर निकल कर जाती हुई है गेंद। अंपायर हम तक अपना संदेश पहुंचाएंगे, एक वाइड बॉल। इस बार सामने की ओर दे मारा है, बॉल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। ये आएगा और एक बड़ा हिट 6 रनों के लिए। एक बढ़िया गेम यहाँ पर हेमल की, लेकिन अपरिश को पता है कि वो जीत के बहुत ज़्यादा नज़दीक आकर पहुँचे हैं, तो इस पॉइंट की कोई भी खाई नहीं करनी है, कोई भी इररिस्पॉन्सिबल स्ट्रोक नहीं खेलना है, और उसी के बीच एक डॉट बॉल ऐड होगा टीम के स्कोरबोर्ड में। इस बार वापस वही देखेंगे, सामने की ओर खेलकर निकाला है और एक डॉट बॉल। 16 ओवर की समाप्ति में स्कोर बढ़ता हुआ 94, 5 रन्स टू विन। अब 16 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर अब है 94। अब 5 रनों की दरकार होगी, 24 गेंद और 5 रनों की दरकार। विहान अब बॉलिंग का मोर्चा संभालेंगे। अब केवल 5 रनों की दरकार होगी यहाँ पर जीवा रॉयल्स के लिए। पहला ही बॉल फुल टॉस देकर मारा है स्क्वायर लेग मिड विकेट के रीजन में, ये आएंगे 6 रन और यहाँ पर इस मैच को जीत लिया है टीम जीवा रॉयल्स ने। जीवा रॉयल्स के लिए एक बड़ी अच्छी जीत यहाँ पर। टीम नवकार को जरूर अगले मैच के लिए बहुत सारी शुभेच्छाएं हम देंगे।